Hey guys, what's up? So, as you know, I don't know what's happening with my streams. Some are just ending in the between, and fuck. Hey guys, what's up? So I don't know what's happening with my streams. Some of them just tend to be ending in between when I don't end them. So that's a problem. And before ending this stream, my cursor had disappeared, and I had to restart my computer. That's why I had to end the stream. And I went for dinner, had coffee, and now I'm back to work. The stream. So I'm actually thinking of developing a app until I get approved for thank you. Okay. We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps you save time, get more views, and do more on YouTube. Wow, that is exactly what I need. Oh, want to put your thumbnail ideas to the test? A/B testing is the way to find. बनेंगी एक्सपेक्टेड बिटवीन 60 to 75 डेज, ठीक है। ये बेचने के काबिल नहीं होंगी क्योंकि हर बंदा बना सकता है, इनकी कम ही वैल्यू होगी और ये कुछ भी नहीं है बनस्पत उनके जिन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया कर चुके हैं। आखिरकार आते हैं भाई अर्निंग पे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप जॉब करोगे तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। अब बात करते हैं सेल ऐप बनाओ, जितना गुड़ उतना मीठा। जितनी अच्छी ऐप होगी उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। मेरी कुछ ऐसी भी ऐप्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, मेरी ऐसी भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यानी उस पर बंदा रिटायर हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन सेल एप्स। एड्स में क्या होता है, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी या सबसे कॉमन स्ट्रेटजी जी। आप ना बीच में इश्तिहार लगाते हो, यानी इश्तिहार सबने गेम खेलूंगी फ्री में दे दी और उसमें इश्तिहार लगा हुआ है। मैंने अक्सर जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया वो क्या कि एक ही गेम को मैंने 2 बार रिलीज किया, एक उसको सिर्फ सेल किया और एक उसमें कोई एड्स नहीं होते, सारा कुछ अनलॉक होता है। और दूसरी बार क्या किया, अपना उसमें एड्स लगा दी और वहां से मोनेटाइजेशन कर दी। फिर होता है जी फ्रीमियम वाला मॉडल। फ्रीमियम वाला पबजी वगैरह में आप देख सकते हो, बहुत सारी अदर ऐप में आप देख सकते हो, आपको एक बेसिक गेम दी जाती है और उसमें या खेल के अपग्रेड करते हो या पैसे लगा के अपग्रेड करते हो, सामान खरीदते हो, ठीक है। दैट इज अ मॉडल ऑफ माइंड जो बहुत मेरे लिए काम किया। गाड़ी के जी आप इंजन ले रहे हो, उसकी एक्सेलरेशन ले रहे हो, ब्रेकिंग अच्छी ले रहे हो, दैट वर्क गुड फॉर मी। जहाज की आप ले रहे हो। फिर आ जाती है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें वो भी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, यानी शादी की ऐप्स कर लो, यानी कि एजुकेशन की ऐप्स कर लो वगैरह वगैरह। जॉब का मैंने जिक्र कर दिया। फ्रीलांसिंग हो गई एक और ऑप्शन कि जी आप बैठे हो, गुरु पे बैठे हो, अपवर्क पे बैठे हो, freelancing.com पे बैठे हो, फाइवर पे बैठे हो, आप लोगों की ऐप्स बना रहे हो। और फिर आ जाता है डेव हाउस और डेवलपमेंट हाउस बेसिकली। और फ्रीलांस में ये कि यहाँ पे आप कस्टम ऐप किसी के लिए बना सकते हो। आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है जी, हमारा पोर्ट है, हमारा जी बड़ा शॉपिंग मॉल है या कुछ भी है, या फिर खुले अन्य आप ऐसे छाप सकते हो। लेकिन इसमें एक और स्ट्रेटजी भी है, आप एक टेम्पलेट बना लेते हो। फर्स्ट करिए रेस्टोरेंट का मेन्यू, ठीक है।
है, वो सैस में भी बिक सकता है, यहाँ पे भी बिक सकता है। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ऐप कोई भी हो जाती है, एक नीश आपने पकड़ी, अब आप उस नीश के ना बिजनेसेस को फोन करते हो। भाई आपका जो टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी वाली ऐप हमारे पास है जो ऊबर का मुकाबला करती है, वो बनाने में इतना मुश्किल नहीं है। ऊबर वाली जो ऐप उसको चलाना मुश्किल था। ऊबर की क्लोन्स जो है ना ढेरों मिल जाती है, बड़ी सस्ती मिल जाती है इंटरनेट पे। आपने क्या करना है, आपने माकूल सी बनानी है और फिर उन बिजनेस को बेचनी है। और दैट मेरी सजा तो है, मेरी एडवाइस कि आप क्या कहते हैं अपना ऐप डेवलपर कैसे बनते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर्मल 0, स्किल्स फोन्स यस, इस पे ना आप आराम से कर लो यार। आपका खर्चा अगर हम देखने बैठ जाए तो 100,000 रुपीज से 1.5 लाख तक जा सकता है। ओके, ये मैक की बात नहीं कर रहा, मैक थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि आपको स्किल सीखना पड़ेगा, उसकी फीस नहीं पड़ेगी, कोर्स नहीं पड़ेगी, वक्त लगेगा, पीसी एंड फोन, ऐसे 1.5 लाख 1.5 लाख। ओके, लैंग्वेजेस अगेन आपका वक्त है, मार्केट प्लेसेस आपके $99 लगेंगे, आपके $25 लगेंगे, एंड पर दोनों में फायदा है। एंड फिर आ जाता है जी टाइम कितना आपका लगेगा। यहाँ था जी 100 घंटे आवर्स, और यहाँ पे भी 100 घंटे था, ठीक है। एच आर एस वो तो आपको लगाने पड़ेंगे 2 to 4 आवर्स डे। यहाँ पे थोड़ा कम लगेंगे, 80 घंटे लगेंगे। लर्निंग आपको बता दीजिए, आप यूट्यूब पे कर सकते हो, यूडेमी पे कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट जा सकते हो, गूगल कर सकते हो। लॉट्स ऑफ यानी इस दौर में बहाने हाथ में मैं यार कोई महंगा स्किल नहीं सीख सकता क्योंकि मैं किसी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटी ने मुझे दाखिला नहीं दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और फर्स्ट ऐप आपकी बेशक आपको पैसे नहीं कमा के देती, इट्स क्या कहते हैं 60-70 दिन में बन जाएगी। अर्निंग में एक और चीज़ है, आप खुद का स्टार्ट भी कर सकते हो। यू हैव मैंने अब ये सेल ऐप जो उसमें आ जाएगी, बट खुद का क्या कहते हैं स्टार्टअप, इसमें डाल देता हूँ स्टार्टअप सिर्फ क्या कहते हैं कोई बंदा अपना बिजनेस करता है, आपके जहन में कोई प्रॉब्लम थी यार, वो आपने सॉल्व करनी है, यू कैन सॉल्व इट थ्रू दैट, और ये आपकी कमाई के जरिए। ऑल द बेस्ट टीम, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना मजीद करियर एडवाइस देता रहूं ताकि आप भटको ना और अच्छी कमाने में लग जाओ। इफ यू हैव दिस स्किल, मिलियनेयर दुबई का वीजा, तुर्की का वीजा, इंग्लैंड का वीजा, अमेरिका का वीजा लग सकता है। यू हैव दिस स्किल, वीजा की जरूरत नहीं है, यहाँ से बैठ के कंपनी के लिए आप काम कर सकते हो। आई हैड अ लॉट ऑफ मोर पीपल, मैंने बहुत सारे बंदे जब दुबई में था तो अमेरिका से मंगवाए, रोमानिया से मंगवाए, पूरे यूरोप से मंगवाए, कह लेते हैं कि उसमें लिथुआनिया और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, फिलीपींस से मंगवाए, यूके से मंगवाए बंदे, तो वो कीमती थे इसलिए उनको मंगवाया, उस जगह ठीक ठाक पैसे देकर उनको रखा। दैट कुड बी यूज, आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके काफी अपने अपने स्टूडियोज हैं, एज टाइम वेंट बाय दे लर्न फ्रॉम मी, दे बिल्ड देयर ओन स्टूडियोज। आप ऐसा कर सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद है, अस्सलाम वालेकुम। और ये भी मुझे कमेंट्स में बता दो, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू लर्न, कि ये कैसे बनते हैं, फलां कैसे बनते हैं। गेमिंग का मैं बता सकता बट थोड़ा सा रूट बदल जाता है, हां कहीं पे ना थोड़ा रुख बदलना पड़ता है, बट कॉस्ट तकरीबन वही है। ओके, याद रखना, ये मेरा वो आपको पता है सच जगह पे आता सारा ये कमाने का मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। So you want to learn how to code? Go to programmingexpert.io. Watch our introductory video. Write your first line up. Kotlin is the most popular programming language for building Android apps, and it can also do a lot of other things. In this beginner's course, Alex will teach you Kotlin from the ground up. Alex is an experienced developer who has created multiple Android apps. In this course, I'll cover everything you need to know in order to be able to create your programs or move to build apps on Android. I will start from zero by downloading the software that we need to write code to creating our first program, and then we're going to move to more advanced topics. We'll cover things like variables, operators, loops, arrays, object-oriented programming, generics, lambda functions, coroutines. Everything will be covered in depth with great detail. Additionally, I'll use beautiful animation while talking about the concept. For who is this course? This course is for complete beginners who have no experience with programming and also for experienced programmers. Kotlin is perfect for beginners because it's very intuitive and concise. And if you already have a background in other programming languages, then this course will be easy for you. So, let's get started. Now it's time to download and install an IDE. And throughout this course, I'm going to use an IDE called IntelliJ IDE, which is an IDE made by a company called JetBrains. Now you may be wondering, what is an IDE? An IDE stands for an Integrated Development Environment. And it's basically the tool that you're going to use to write your code in. And IntelliJ IDE is like a text editor, but a very sophisticated one because it has a lot of features like highlighting our code, showing real-time errors and suggestions. You can run and compile your code just by a few clicks. In other words, it's making the process of writing code easier and better. Therefore, let's download IntelliJ IDE. So I'm going to open my browser. And in the search bar, we type IntelliJ IDE, press enter. And we click on this download link. And on the downloading page, you're going to see two options. Ultimate, which is paid. So you
need to pay in order to download it, and community, which is free. And the difference is that the Ultimate has more features and community has less features, but community is enough for our purposes. Also, pay attention on the left hand side. When I'm currently recording this video, the latest version is 2021.1.2, which was released on the 1st June of 2022. And if you look at the system requirements here, if you click on that, you will see that this IntelliJ IDE only works for a 64-bit version of Windows. So if you have a 32-bit version of Windows, this will not work for you. Now, if you have macOS or Linux, you should download the particular version for your system. And if you don't know how, just tell me in the comments and I will make 2 separate videos and show you how to do. Now, I'm going to download the community version for Windows. So Kotlin is the most popular programming language for building Android apps, and it can also do a lot of other things. In this मेरे पास और देने कितने अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, असली वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो लो जी, ये फ्री में मैं आपको जावास्क्रिप्ट की फुल प्रोग्रामिंग की कोर्स दे रहा हूं। है तो वैसे 36 वीडियोस, लेकिन हमने जोड़ के आपको एक ही वीडियो में दे दिया है। सीखें, आगे भी सिखाएं, छा जाएं। गो मेक अस प्राउड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन खान है और मैं आज आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट। हमारे जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट के साथ हम किस तरह जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ एज अ टेक्स्ट एडिटर, और आप चाहें तो कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड या कोई और जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे हम कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML के लिए, और आप चाहें तो फाइल के टैब में जाके भी यहाँ से एक फाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली मैं जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक कोड है वो लिख लेता हूँ। और यहाँ पे बॉडी के सेक्शन में आके कंट्रोल एस दबाता हूँ। नाउ अब यहाँ पे हम इसको और जावास्क्रिप्ट की जो हम फाइल बनाएंगे उसको हम सेव करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये रहेगा कि कोई से भी एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लें। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ राइट क्लिक के ज़रिए, न्यू फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं lesson 1, और हम फाइल जो हमारी HTML फाइल होगी उसके फोल्डर के अंदर जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं lesson1.html, बट .html इसने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है एज अ फाइल टाइप, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ना हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पार्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में ज़रूरी है कि जो भी हम कोड लिखें वो विद इन स्क्रिप्ट टैग हो, जैसे HTML का कोई और टैग होता है इसी तरह की स्क्रिप्ट टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं बॉडी सेक्शन में भी और हेड सेक्शन में भी। और अब इसकी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके ज़रिए हम ये देख सकें कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में ब्राउज़र में जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो रन हो रही है। हम लिखते हैं कंसोल, फ़िलहाल हम कंसोल में जाके काम करेंगे ब्राउज़र के, तो console.log, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं 100 लेट से। तो कंट्रोल से आप सेव करें, फाइल को मिनिमाइज़ करके आप अपने lesson 1 में जाएं और यहाँ अपनी HTML के जब आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो कंसोल में आपको देखना पड़ेगा कि जो हमने प्रिंट करवाया है वो आया या नहीं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कंसोल में आप देखेंगे 100 प्रिंट हुआ हुआ है। अब ये सेम चीज़ हम यहाँ से उठाते हैं और इसको हेड सेक्शन में प्रिंट कर देते हैं कंट्रोल S और कंट्रोल V के ज़रिए। तो जब आप इसको कंट्रोल S करेंगे तो आप दोबारा ब्राउज़र में आएँ और चेक करें कि ये स्टिल रन होता है या नहीं, तो ये देखें दोबारा 100 प्रिंट हो गया है। अब हम सेम चीज़ नेक्स्ट स्टेप के ज़रिए जो कि हमारा एक्सटर्नल फाइल होगा जावास्क्रिप्ट का, हम क्रिएट करते हैं कंट्रोल N, और यहाँ भी जो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल X कंट्रोल S ताकि सेव हो जाए, और यहाँ पर आगे कंट्रोल V कर देते हैं ताकि जो भी कोड था वो पेस्ट हो जाए। तो कंट्रोल S दबा के इसको भी हम सेव करते हैं और आप देखेंगे हमारे पास सेम डायरेक्टरी खुल गई है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसी फोल्डर में इस फाइल को रखें जावास्क्रिप्ट की जहाँ पे आपकी HTML फाइल प्रेजेंटेड है, नहीं तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ भी आपकी फाइल लोकेटेड है। तो हम इसको हम नाम रख देते हैं lesson1.js जो कि जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, और सेव कर देते हैं। तो हम देखते हैं वापस अपने ब्राउज़र में जाके कि जो हम दोबारा हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है उससे रन होता है या नहीं। बस उससे पहले हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग को कि कहाँ से आपने HTML फाइल लेनी है। तो हम यहाँ पे एक src जो कि सोर्स एट्रीब्यूट है, यहाँ से हम आके इसकी लोकेशन देते हैं जावास्क्रिप्ट की जो कि हमारी है lesson1.js। कंट्रोल से आप सेव करें और जब आप ब्राउज़र में जाके देखेंगे इट शुड रन, तो ये देखिए वापस रिफ्रेश पे इसने 100 शो किया। दैट मीन्स कि जो आपका जावास्क्रिप्ट कोड था वो भी रन हो रहा है एक्सटर्नली। तो ये दो वेज थे। अच्छा, इस चीज़ को आप कंट्रोल X करके वापस बॉडी में ले आएँ तो भी ये वापस सेम वे में चलेगा। और लास्ट वे जो हमारा है कि इनलाइन हम जावास्क्रिप्ट को लिखें, तो वो है कि जब भी कोई एलिमेंट, जैसे कि हम बटन लेते हैं और इस पर कोई इवेंट हम होकर करवाएं। अब इवेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप ये जान लें कि जावास्क्रिप्ट भी विद इन द लाइन काम कर सकती है। तो हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं विच इज़ क्लिक। तो हम ऑन क्लिक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लेंगे, बट जावास्क्रिप्ट बेसिकली यहाँ पे काम कर रही होगी। तो ऑन क्लिक का हम करवाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि अलर्ट करो। सही, अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है अगेन, तो अगर आप इसको अलर्ट करवाएंगे तो वो ब्राउज़र की विंडो पे आपको दिखाएगा जो कुछ भी आप इस पेरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे। हम वापस यहाँ पे 100 लिख लेते हैं लेट्स से, और कंट्रोल S करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं। तो ये देखें ऑन रिफ्रेश यहाँ पे एक बटन बना हुआ आ गया, बट स्टिल ये क्लिक पे रन होगा लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है हमने। तो हम आते हैं वापस और बटन के टैग में यहाँ कुछ लिख देते हैं, लेट्स से क्लिक मी, कंट्रोल S, वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ क्लिक मी लिखा हुआ होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए विद इन द लाइन उसने अलर्ट करवाया 100। अब ये 3 तरीके हो गए कि हम किस तरह जावास्क्रिप्ट अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये था कि हम इंटरनली यहाँ पे यूज़ करें। सेकंड ये कि हम इसको एक्सटर्नली अपने दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं और वहाँ से ऐड करवाएं यहाँ पे द सोर्स एट्रीब्यूट देके। और तीसरा ये कि हम यहीं पर इन लाइन जावास्क्रिप्ट को कॉल करवाएं। नाउ अब हम देखेंगे वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास कुछ फजूल चीज़ें हैं उनको तो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं जो फिलहाल हम यूज़ नहीं करने वाले। और ये देखें जो एक्सटर्नली फाइल हमने कनेक्ट की थी वो स्टिल यहाँ पे प्रेजेंटेड है। अब चाहें तो आप विद इन द बॉडी सेक्शन स्क्रिप्ट में आके कोड लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नली, क्योंकि आपने एक्सटर्नली यहाँ पे एक फाइल लिंक की हुई है, आप यहाँ पे आके अपना कोड कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं
वेरिएबल बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो कि आपकी कोई किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के, तो लेट्स से मैं ENG लिखता हूँ और यहाँ पे =2 लगा के अपने मार्क्स असाइन कर देता हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि 85 नंबर्स आए मेरे, तो अब इस 85 नंबर्स को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ console.log के जरिए। और भी तरीके हम आगे देखते रहेंगे जिस तरह लेसन्स फॉलो होंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम और पेरेंथेसिस के बीच में अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एट द एंड ऑफ द लाइन ज़रूर सेमीकोलन लगाएं, क्योंकि लाइन टर्मिनेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में और ये किसी भी तरह के आपके कोड में एरर्स पैदा कर सकते हैं। नाउ अब इस वेरिएबल को हमने यहाँ console.log में कॉल किया है और इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन की है 85। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और ब्राउज़र में आके रन करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कंसोल में इसने एक वैल्यू दिखाई है जो कि 85 है। You may not know what SSL is, but hackers do, and they hate it. SSL helps protect your... अब ये जो var का कीवर्ड हमने यूज़ किया है, ये जिस तरह ये वेरिएबल को इंडिकेट करता है, इसी तरह हमारे पास दूसरे भी वेरिएबल्स के कीवर्ड हैं, जैसे let। अब let भी बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करता है, बट इसमें स्कोप की एक लिमिट होती है। अब ये स्कोप हम आगे जिस तरह पढ़ते जाएंगे चीज़ों को आपको समझ आएगा, बट अगर अभी फ़िलहाल की अपन बात करें तो आप let और यहाँ पे लेट से आप कोई दूसरा क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल MATH मैथ्स, और यहाँ पे अपने मार्क्स दे दें आप लेट से 70। और अब यहाँ पे आप console.log में इसी फाइल को, इसी लाइन को हम Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रिंट करवा लेते हैं मैथ्स के मार्क्स। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स आते हैं, तो ये देखें 70 अगेन। तो चाहे तो आप var का कीवर्ड यूज़ करें या फिर let का कीवर्ड यूज़ करें, ये दोनों एक ही तरह से काम करेंगे, बट इनका जो स्कोप है वो डिफ़र करता है। अब var का स्कोप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप कहीं भी यूज़ करते हुए जाएंगे वो बिल्कुल वर्क करेगा। अब let का स्कोप लिमिटेड होता है, जहाँ भी आप उसको क्रिएट करते हैं या तो वो उसके बाहर काम नहीं करता या तो वो उस स्कोप के अंदर काम नहीं करता। बट अगेन स्कोप ऐसी चीज़ है कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ हम एक और वे देखते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने का, जो कि है कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम कॉन्स्ट इसका कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं अगेन, और दिस टाइम हम कौन सा सब्जेक्ट लें। लेट्स से हम सब्जेक्ट ले लेते हैं लेट्स से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल का P ऑफ मैनेजमेंट, तो हम POM फॉर नाउ लिख लेते हैं और यहाँ पे =2 करके हम अपने मार्क्स दे देते हैं लेट्स से 80, और इसको भी हम प्रिंट करते हैं जिस तरह हमने दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ POM, और ये मेक श्योर करें कि जो भी आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंटिंग में हो या दूसरे दीगर चीज़ों में, कि उनकी जो केस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप POM यहाँ पे आपने बड़ा लिखा है और यहाँ पे आप छोटा लिखेंगे तो जो है प्रिंट नहीं करेगा और फिर एक एरर शो करेगा। तो अब हम जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें तीसरे सब्जेक्ट से मार्क्स जो कि 80 उसने शो कर दिए। अब कॉन्स्ट जो है उसमें डिफरेंस ये है कि जब आप इस वेरिएबल को क्रिएट कर देते हैं तो अब ये वैल्यू चेंज कभी भी नहीं हो सकती। अब मैं अगर यहाँ इंग्लिश पे जो वेरिएबल है, मुझे अगर बाद में कभी ख्याल आया मैं इसको चेंज कर देता हूँ विद इन द लाइन, नहीं आगे जाके किसी भी जगह पे, तो मैं यहाँ पे आके क्योंकि एक वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू रीअसाइन कर सकता हूँ। तो मुझे पता है एक इंग्लिश का वेरिएबल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मुझे यहाँ पे वार्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक दोबारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी बना हुआ वेरिएबल है मैं उस पर जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो बढ़ के 85 से 90 हो गई है। सेमीकोलन लगा के Ctrl S करता हूँ। अब जब मैं प्रिंट करूँगा इस console.log में, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश की जो वैल्यू पहले यहाँ पे 85 प्रिंटेड थी वो 90 हो जाएगी। जैसे कि देखें 85 है यहाँ ब्राउज़र में, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें 90 हो गई, क्योंकि मैंने वैल्यू को दोबारा रीअसाइन कर दिया। इसी तरह आप दूसरे वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो कि हमारा POM है उसको मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ नीचे और कहता हूँ कि अब आपकी वैल्यू जो 80 थी वो बढ़ के 85 हो गई है। मैं Ctrl S करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र में आके पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसने मुझे एक एरर शो कर दिया है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को वापस कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये तीनों हमने जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं वो देखी, और इनके साथ साथ अगर हम एक एडिशनल चीज़ करें जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो पहले हम इसको हटा लेते हैं POM को, क्योंकि हम इसको वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो वेरिएबल और जो लेट कीवर्ड, जो वार और लेट कीवर्ड है, इनके साथ हम इनको दोबारा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं दोबारा इंग्लिश को लेता हूँ और कहता हूँ कि आपकी वैल्यू जो कि 85 थी उसमें आप प्लस कर लें 5 और सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो 85 की जगह मुझे 90 लिखना पड़ रहा था, मैंने यहाँ पे
सिर्फ 85 लिखा और डायरेक्ट जो भी मुझे एडिशनल चीज़ें करनी है वो ऐड कर ली। बट स्टिल आप ये देख रहे हैं कि हम दोबारा रीअसाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं काट लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमने जिस तरह इंग्लिश की वेरिएबल वैल्यू चेंज की है, इसी तरह मैथ के जो वैल्यू है उसको आके हम माइनस करते हैं। तो अभी मैथ की जो वैल्यू है वो 70 है, मैं 70 पे जाता हूँ और यहाँ से माइनस कर देता हूँ 5। तो आप देखें कि इंग्लिश की वैल्यू पहले 85 थी, मैथ की 70 थी। अब दोनों इंग्लिश में जो होगा +5 होगा और मैथ्स में -5 होगा। तो हम ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज, तो ये देखें 85 में 5 ऐड हो गए हैं और 70 में जो है 5 माइनस हो गए हैं। Spike needs to launch his bold new delivery business online without costs going sky high. तो ये इस तरह आपने देखा कि प्लस और माइनस के जो ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ, और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे डिवाइड आप करना चाह रहे हैं किसी वैल्यू को या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट के स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में किस तरह यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास पहले से कुछ डेटा लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, और लेट से यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, std नेम, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड वर्ड है उसको मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। ओके, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट इट इज़ स्टैंडर्ड वे कि हम जावास्क्रिप्ट में लोअर कैमल केस में जो वेरिएबल्स हैं और जो हमारे फंक्शन नेम्स होते हैं उसको क्रिएट करते हैं। ना एक हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से अहमद, और ये देखिए कि मैंने यहाँ पे डबल कोटेशंस यूज़ की हैं व्हेन राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड। अगर हमारे पास डिजिट्स हों तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम डबल कोटेशन यूज़ करें, बट क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना ज़रूरी है। ओके, तो हमारे पास ये नाम आ गया है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं console.log करवाता हूँ std name, Ctrl+S, जैसे ही अपने ब्राउज़र में आऊँगा, पेज को रिफ्रेश, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कंसोल में अहमद लिखा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है हम उसको किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेट्स से मुझे बहुत सारा मेरे पास डेटा है और वहाँ पर मुझे लाइन ब्रेक से लिखना है। तो ये देखिए जिस तरह मैं लिखता जा रहा हूँ ये मुझे एरर्स दिखा रहा है कि ये इस तरह आप लिख नहीं सकते। फॉर दैट रीज़न जब भी हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होगी तो हमें 2 कैरेक्टर्स यूज़ करने होंगे जो कि प्रेजेंटेड हैं आपके 1 के बराबर में, जो आपका इंटीजर है, कीबोर्ड पर प्रेजेंटेड है, या फिर अंडर द एस्केप की। ना अब इसके अंदर आके आप कुछ भी लिखें तो इट इज़ एक्सेप्टेबल कि आप मल्टी लाइन में कोई भी डेटा लिखना चाह रहे हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कि हम किस तरह स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग और हमें मिलाना चाहें। लेट्स से मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, एफ नेम दैट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट नेम, और यहाँ फर्स्ट नेम में मैं लिख लेता हूँ अहमद, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे अहमद की जगह लिख देता हूँ खान, Ctrl+S। नाउ अगर मुझे ये दोनों वेरिएबल्स मिला के प्रिंट करने हैं तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो मैं सिंपली नेम लिखूँगा एफ नेम, उसके साथ एक प्लस लगाऊंगा एंड देन एल नेम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्केटिनेशन का, जहाँ हम 2 स्ट्रिंग को मिला के लिखते हैं। ऑल्दो वी कैन क्रिएट दिस इन अनदर वेरिएबल बट वी आर जस्ट प्रिंटिंग हियर। Ctrl+S, पेज को हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अहमद खान इसने दिखा दिया है। नाउ अगर अहमद खान के बीच में आप स्पेस लगाना चाहें तो एक और प्लस लगाएंगे बीच में और डबल कोटेशन के साथ एक स्पेस यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड कि कॉन्केटिनेशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग में किस तरह यूज़ होता है, और ये देखिए हमारे पास स्पेस आ गया है। तो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अब एक और डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स की, जो कि है बूलियन। अब बूलियन बेसिकली वो डेटा टाइप होती है जहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पुराने वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि पाकिस्तान का कोई मैच हुआ, तो अब हमें ये बताना है कि वो जीता या फिर नहीं जीता। तो वहाँ पे सिर्फ 2 सिचुएशन हैं, वो कोई वैल्यू नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है 30 हो गया या 60 हो गया, तो वहाँ पे नंबर्स का कोई काम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2 बातें, जब जहाँ भी हमें सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर हो सकें किसी भी सिचुएशन में, हम कोशिश करते हैं कि एक बूलियन वेरिएबल यूज़ करें। तो बूलियन लिखने के लिए आप अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे var, और इसमें हम एक नाम रख लेते हैं, लेट्स से when। ओके, when। नाउ इसमें असाइन कर देते हैं हम वैल्यू ट्रू। फॉर नाउ यहाँ पे हमने ट्रू स्टोर करा है विदाउट कोटेशन, क्योंकि अगर कोटेशन में अगर हम लिख देंगे तो अगेन ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं बना रहे। तो नाउ अब इस ट्रू को हम console.log करवाते हैं ताकि हम देख सकें इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस तरह कंसोल में शो होती है। आप लिख लेते हैं when, Ctrl+S, वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ट्रू प्रिंट कर रहा है। सेम गोज़ फॉर द फॉल्स। अगर हम ट्रू की जगह फॉल्स लिख दें, Ctrl+S करके वापस आएँ,
तो आप देखेंगे ट्रू या फिर फॉल्स जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। बट इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन हैं जो कि आगे हम पढ़ते रहेंगे चीज़ों को, आप देखेंगे कि किस तरह बूलियन वेरिएबल्स काम आते हैं हमारे किसी भी तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए, या जो हमारी दूसरी कंडीशंस होती हैं जहाँ हमें केसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। तो ये थे हमारे बूलियन वेरिएबल्स। ओके, तो हमने लास्ट लेसन में सीखा कि बूलियन वेरिएबल्स किस तरह काम करते हैं और दो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स। नाउ अब हम जो नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं वो एरे का है। एरे बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ को एक जगह स्टोर करने का नाम है। जैसे कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है और अगर आप वेरिएबल्स में बनाना चाहें तो हम इसकी एग्जाम्पल पहले करके देखते हैं। उससे पहले कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको हम क्लोज कर लेते हैं और एक एरे का न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप भी ऐसे ही करें। और इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं जो हमारे पास ओपन फाइल्स हैं, और इसको हम Ctrl+Shift+S करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप। और इसका हम नाम रख लेते हैं array.html। HTML की एक्सटेंशन इसने फाइंड आउट कर लिए, सेव। अब हम एक्सटर्नल फाइल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यही इसी डॉक्यूमेंट में हम अपनी जो स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट की वो लिखेंगे। यहाँ पे आके अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स का नाम लिखना है फॉर सपोज, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम 1 और यहाँ पे स्ट्रिंग्स में उसका नाम दे दूंगा लेट्स से अहमद, और फिर यहाँ से नेम 2 और फिर अली। बट दैट प्रोसेस वुड टेक टू मच टाइम। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही वेरिएबल लें और उसमें किसी तरह डेटा स्टोर करें जो कि स्ट्रक्चर्ड हो। तो हम यहाँ पे जब हम एरे बनाते हैं तो हम लिखते हैं नेम्स वॉट एवर जो भी आप नाम रखना चाहें, और उसके बाद इक्वल्स टू के आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो इंटीजर्स भी हो सकती हैं और नाम भी हो सकते हैं या बूलियन वॉट एवर जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पे अली कॉमा सेकंड नेम अहमद, थर्ड नेम लेट्स से सारा। तो ये तीनों नाम आपने एक वेरिएबल में इधर स्टोर कर लिए जो कि अब हम रेफ़र करेंगे कि ये एलिमेंट जो है नेम्स का है, और इसमें जो तीन इसमें नाम लिखे हुए हैं इनको हम कहेंगे कि भाई ये तीनों एलिमेंट्स एरे में किसी ना किसी इंडेक्स पे रखे हुए हैं। अब एरे जब भी हम एरे की बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 से रेफर होता है। तो जब हम 0 इसको बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा, और जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 2th एलिमेंट होगा, लाइक फ्रॉम 0th 1 और 2। सो अब ऐसे ही जिस तरह हम 0 फर्स्ट सेकंड करते हैं, बस आपने ये ख्याल रखना है कि वो 1 से चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही है। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने कंसोल में प्रिंट करवा के कि जो हमने नेम्स हमने अब वेरिएबल बनाया है एरे का, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इसे वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे, एक एरे बनाया है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं इस मल्टीपल स्टोर हो गई हैं। अब इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, पुराने वाले डॉक्यूमेंट को कैंसिल आउट करते हैं और array.html को रन करके कंसोल में देखते हैं। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और यहाँ पे कंसोल में देखें इसने एरे बताया और उसमें तीन नाम जो हैं वो इस तरह से प्रिंट कर दिए हैं। 0 इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट पे या 1th जो भी आप इसको कॉल करना चाहें, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट आपका प्रिंट हो तो आप सिंपली 0 लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, या 1 लिखें तो जो 1 इंडेक्स पे होगा वो अहमद है हमारा, क्योंकि 0 अली है। तो हम इस पर डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं और देखिए इसने अहमद हमें बता दिया। अब हम एक और एरे बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे इसका हम नाम रख लेते हैं मार्क्स। हम कहते हैं कि भाई आपने जो मार्क्स लिए हैं फर्स्ट इंडेक्स पे वो 100 हैं, और सेकंड इंडेक्स पे 90, और थर्ड इंडेक्स पे लेट्स से 60। तो अब अगर हम नाम के साथ साथ Ctrl+C Ctrl+V कंसोल की लाइन हमने प्रिंट की, और यहाँ पे नाम के साथ साथ हम मार्क्स का प्रिंट करते हैं एलिमेंट नंबर 1। देखिए नेम्स के फर्स्ट पे अहमद है और मार्क्स के फर्स्ट पे 90 है, क्योंकि हम 0 के रिस्पेक्ट से चल रहे हैं। तो हम देखते हैं Ctrl+S करके रिफ्रेश, और आप ये देखें दोनों चीज़ें अपनी जगह पे प्रिंट हो गई हैं। When the stakes are high at work, your tone matters. Grammarly's advanced tone suggestions can help. Because when you write with just the right confident tone, you can meet any challenge to move your project forward. Grammarly's advanced tone suggestions can help you find just the right personable tone to motivate and build trust with your team. Grammarly's advanced tone
इस एरे को लिखने का तरीका इस तरह भी हो सकता है कि आप चाहें तो इसको मल्टी लाइन में लिख लें कुछ इस तरह, ताकि आपके लिए थोड़ा और रीडेबल हो सके। और इससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट लाइन से फ्रॉम सिंगल लाइन आप मल्टीपल लाइन में आ गए, इट वुड वर्क द सेम। नाउ अगर आप इसको एक लाइन में रखना चाहते हैं तो आप एक लाइन में भी रख सकते हैं। अब हम इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं एरे को बनाने का, जो कि हम बनाते हैं var, और इसका हम लेट्स से दूसरा नाम ले लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स नेम्स। और मैं आपको यही बताता चलूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोअर कैमल केस में काम करती है, तो आपका हमेशा फर्स्ट जो लेटर होगा वेरिएबल का आप कोशिश करें छोटा हो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि छोटा बड़ा हो, बट एक तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का, जब भी आपका वर्ड ब्रेक हो रहा हो तो आपने उस वर्ड को कैपिटल कर देना है। अब यहाँ पे दोबारा एरे बनाता हूँ, बट इट्स टाइम वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। मैंने इसको खाली छोड़ा और अब मैं इसको कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स नेम्स में 0 इंडेक्स पे आप एक वैल्यू स्टोर कर दें जो कि है सारा। सही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये एरे बनाया सेम इस तरह दिखे, तो आपने सिर्फ वही अली कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और सेकंड इंडेक्स में हमारा अहमद रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं फर्स्ट इंडेक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और सेकंड इंडेक्स पे जो कि थर्ड एलिमेंट जो होगा उस पर सारा रखा हुआ है। तो ये देखिए कि अगर हम इसको प्रिंट करें नेम्स को और स्टूडेंट नेम्स को, ये दोनों एक ही तरह काम करेंगे। हम इनको कंसोल में प्रिंट करवा के देखते हैं, स्टूडेंट्स नेम्स और कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि ये दोनों एक जैसे तरीके से काम करते हैं या नहीं। तो देखें दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों 0 1 2 अपनी अपनी इंडेक्स पे प्रिंट हो चुके हैं। और इसका एक और हम तरीका I should learn Postman because I know Java looks like the background of Kotlin, but they're saying because Java only works on Android, if I'm not wrong, and Kotlin can be applicable on multiple platforms, and I want to learn a language that's applicable on multiple platforms. I chose to study at Cardiff University, one, because of the program. They had invested a lot in the program, but also because I actually
Kotlin is the most popular programming language for building Android apps, and it can also do a lot of other things. In this beginner's course, Alex will teach you Kotlin from the ground up. This course is for complete beginners who have no experience. And in the search bar, type IntelliJ IDE. Press enter, and we click on this download link. And on the downloading page, you're going to see two options: Ultimate, which is paid, so you need to pay in order to download it, and Community, which is free. And the difference is that the Ultimate has more features and Community has less features, but Community is not for our purposes. Also, pay attention on the left-hand side. When I'm currently recording this video, the latest version is 2021.1.2, which was released on the 1st June of 2022. And if you look at the system requirements here, if you click on that, you will see that this IntelliJ IDE only works for a 64-bit version of Windows. So if you have a 32-bit version of Windows, this will not work for you. Now, if you have macOS or Linux, you should download a particular version for your system. And if you don't know how, just tell me in the comments and I will make two separate videos and show you how to do. Now, I'm going to download the community version for Windows. So click to download the community. Now, our downloading is starting on the right-hand side on the top. And if you have a different browser, you'll see this in a different place. So once the downloading is finished, just open this file. I'm going to close the browser now because I don't need the browser, and the installation will start immediately. To open this file up, so click to download the community. Now our downloading is starting on the right-hand side on the top. And if you have a different browser, you'll see this in a different place. So once the downloading is finished, just open this file. I'm going to close the browser now because I don't need the browser, and the installation will start immediately. Now it's asking us if you allow this app to make changes to our device. Click yes. Here you need to click on next. This is the folder location where IntelliJ IDE is going to be installed. You can keep the default location or you can change it if you want. I'm going to keep the default location, so I'm going to click on next. And here I'm going to check this box to have a Destra shortcut. I'm going to click on next. Now I'm going to click on install, and IntelliJ IDE is going to be installed on my computer. As you can see on the left hand side, IntelliJ already appeared. Now let's wait until the installation finishes. When the installation finishes, just check this Run IntelliJ IDE Community Edition and click on Finish. Now IntelliJ IDE is going to open. Now it's asking us if you want to import IntelliJ settings. So if you have the previous version of IntelliJ IDE, you can import the settings here. But I'm going to click Do Not Import Settings and click on OK. Now IntelliJ IDE, and here I'm going to show you how to add more themes, not just the ones provided by IntelliJ IDE. Now click back on Projects, click on this plus button where it says New Project, because we need to configure the JDK now. And now here we have JDK, and we have in red, in angle brackets, we have no SDK. And now here we need to add the JDK, and JDK stands for Java Development Kit, SDK stands for Software Development Kit. So Software Development Kit is the Java Development Kit, no matter how we call it. This thing contains the tools that IntelliJ IDE needs in order to be able to compile and run our programs, because without them IntelliJ IDE it's like an empty text editor. So it needs those tools in order to be able to work with our particular programming language, which is Kotlin. Now to download the JDK, and we use Java Development Kit because Kotlin and Java are interoperable, and that means that we can use the existing tools and library which Java already has in our Kotlin project. So we click here on this No SDK and click here where it says Download JDK. Now, on this window, we select version 17, not version 18, because this is the latest version 18. We choose version 17 because this is the version which has the long-term support. And that means that it will receive bug fixes and updates for several years to come without you needing to switch to a new version when that new version is released. For the vendor, we choose Amazon Creator, and I'm going to let the default location. So I'm going to click Download to download the JDK. Now the JDK is going to be downloaded. Now the JDK has been installed, and it's installed on our IntelliJ IDE, and now we can create our projects. But I'm not going to create a project, so I'm not going to click on create. I'm going to click on cancel, and in the next video we're going to create our first project. And we're also going to talk about a little bit the JDK and the JVM. So see you in the next video. Now it's time to create our first project, and there is a tradition in programming that our first program should be to output the text hello world to the console, and this is what we're going to do in this video. On the left hand side, make sure to have project selected, then click on this plus button to create a new project. We need to name our project. Okay, so we select Kotlin. If Java is selected, just select Kotlin. For the build system, we select IntelliJ, and next we have the JDK, the Java Development Kit. And if for whatever reason it says here in angle brackets no JDK, just click on that and go down here down of two options. It should say detected as JDKs, and you will see the JDK down there. You're going to see Amazon Creator version 17. Just click on that, and it's going to be added here. Next, we have this add sample code, and what this is going to do, as the name implies, is going to generate some code for us. But I don't want to have that code generated now, because I want to type that code myself to create the project. And here we have the tips. You can keep the tips activated because it's useful information, but I'm going to check this. Actually, I'm going to just close it. Here we have those windows which says there is a plugin update installed.
I'm going to close this. So what we have now on the left hand side is called the project pane, and here we have some folders which IntelliJ IDE generated for us. But now I want to show you how to check for IntelliJ updates, because in this way we'll have the latest features throughout this course. And to check for IntelliJ updates, you go to help and you go down here where it says check for updates, and here you can check for IntelliJ updates, and you'll see a window down here, and if there is an update, it's going to say that there is an update and you can install that update. But now it's saying that you already have the latest version of IntelliJ IDE and plugins installed because we have the latest updates. But it's good to check for this because in this way we'll have the latest updates throughout this course. Next, check if you want to check for Kotlin updates, so for the programming language Kotlin, you go to Tools, Kotlin, and go here where it says Configure Kotlin plugin updates. And if there is a new update, you'll see it here, and you click on Install, and that update is going to be installed on IntelliJ IDE. So there is no update because we have the latest updates. I'm going to click on OK. Now let's focus on the left hand side. And if you see something like this and you don't see this in this expanded form, just click on this greater sign in front of SRC. SRC stands for source. This is where our source code is going to go. Then click on this greater sign in front of main and make sure to have the folder Kotlin selected. On this folder Kotlin, this is where we're going to have our code. But first we need to create a file. And the file is the thing where we're going to put our code. So we right click on this, go to new, and here we select on the right hand side, we select Kotlin class file. Now we need to give a name to our file, and I'm going to call this file main. You'll see the reason for this later. So I'm going to call this file main. The name also should be in Pascal case, so it should start with a capital letter, and if it has multiple words, every word should start with a capital letter. And from these options that we have here, we select file because we're going to create, as I said, the file. Now press enter. So you want to learn how to code? Go to programmingexpert.io. Watch our introductory video. Write your first line of code. Feeling intimidated? Not to worry. Our platform is user-friendly. Our curriculum guided. Our videos detailed. Our instructor qualified. Our coding workspace intuitive. The best part? You can work at your own pace, on your own schedule, and with hundreds of practice questions and multiple coding projects. Programming Expert is the all-in-one platform to learn how to code at a fraction of the cost of a traditional education. Simple, powerful, affordable. That's Programming Expert. Now the file was created for us, as you can see in the folder Kotlin. Now we have main.gt, we have the file, and also it opened the file for us. Let's click there. Now if you don't have the file opened, and if you have something like this, just double click on the file and the file is going to be open for you. Now we're going to type some code. Now you need to type exactly what I typed. So type fun. So while I am typing, as you can see, IntelliJ is trying to help us and is giving us some suggestions. So he's saying, do you mean fun? And if you want to fill in that for you, just press enter, because I want to type that fun keyword. Fun, and it also added the space. So fun space, then you type main, and next you need to put parentheses. And as you can see, this play button now appeared. I'm going to explain immediately why. And we put the left parenthesis, and when we put the left parenthesis, the right parenthesis is going to be added automatically. So we put the left parenthesis, and the right parenthesis was added automatically. Then we get outside of the parenthesis, we press space. Now I'm going to add curly braces. And again, we put the left curly brace, and the right curly brace is going to be added automatically because IntelliJ is helping us. Now we're inside the curly braces, and now we press enter. And it added the curly brace on the third line. It also indented this line for us. Now let's talk about what we have here. Now what we have here is what is called the main function. And the main function is the entry point of our program. So every program that you create, it first needs this entry point in order to be able to compile your code. But let's take each part of this main function individually to talk about. So first we have this fun. And fun is the keyword for creating a function. And you can use fun keyword to create your own functions, but you're going to see that in future videos. Next we have main, and main is the name of this function. Functions can have different names, but main is a special one, as I said, because main is the entry point of our program. Every program that you create needs a main function in order to be able to run your code. And in fact, if I change the name of this function to fun main, let's say A, the play button immediately disappears, because now we don't have an entry point and our program can't run. So this is a special function, and functions can have different names, as I said. And as you'll see when you're going to create your own functions, that you can create, you can give different names to your functions. Now, next we have parentheses, and we have parentheses because functions can take parameters and can do some work with those parameters. But our function doesn't take any parameter. But we still need to provide the parentheses because they are part of the syntax. And you can think of the syntax like the grammar rules that you need to respect in a specific language in order to be understood. And in the same way, this is the syntax in the programming sense. It's like the grammar rules in which the compiler, as you will see what is the compiler later. The compiler enforces you to respect those syntactical rules, which is to have parentheses for a function, in order to be able to understand your code. Because if I delete the parentheses here, now we have an underline which says expecting parentheses. So you need to respect the syntactical rules in order for
your code to be understood. Next, we have curly braces, and we have left curly brace and right curly brace, and this is called the body of the function. So this is where our code goes. So this is also called the code block because it's the block of code. This is where our logic, our lines of code go. We define them inside the curly braces. So this represents the body of the function. And let's add some code. And I'm going to type print line here. So because we need to output something in the console. So we type here print line. So we type print, and while I'm typing, you should see a suggestion, and we have the suggestion print line. And we select the first one to fill in for us. And now we go inside the parentheses of the print line, and we put double quotation marks. And inside the double quotation marks, we type hello world. Now we need to run this code. And in order to run this code, to compile this code, we can do it in two ways. First, you can click on this play button that we have here, or you can right click and you can go here where it says run main.kt, and the code is going to be compiled. And let's do it from here first. I'm going to click on this play button to run our code, and I'm going to see the console opening down, and you're going to see the text hello world outputted. So the console opened, and we have hello world. We have the text that we type inside this thing that we have here. This is also a function, and we have this code outputted now in the console. The console opened. Now I'm gonna close the console to explain what this print line is. This print line that we have here is a function also, but it's a function which takes some which takes input, and the input is this text. And this function, its job is to take whatever you pass as the input and to output that in the console. So this is what this print line is doing. And this is a function that we didn't create. We didn't type fun print line and then call it. This is a function which is built into Kotlin. This is a function which is already built by the Kotlin programmers. So we just call that function inside our code, and you can use it. You don't need to create this function. So this is what this print line is doing. So it's taking whatever you pass inside the parentheses, and it's outputting that in the console. So this is our discussion about the first program, which is to output some text in the console, hello world. And now I'm going to show you that. Now I'm going to show you an illustration to understand what is the JDK, the JVM, and how Kotlin and Java achieves this interoperability. Because Kotlin and Java are fully interoperable, and that means that you can have a Java project to which you can add Kotlin code, and you can compile that code, and everything will work fine. And also I'm going to explain what the word compile means. And for that, I'm going to bring an illustration here. So this is the illustration, and let's talk about what we have here. First, we have Kotlin source code, and Kotlin source code is the code that we wrote. Is this code that is meant to be human readable. So this code is the code that we as humans can understand. We can write this code, we can read this code, but the computer doesn't understand this high level code that we wrote. It needs something. It needs machine code. It needs binary code in order to be able to understand. And this is where the JDK comes into action. So our Kotlin source code, again, this code, which is meant to be human readable. Then it's when we press on that play button when you press on that play button on this button, and the code is compiled, what happens under the hood is that Kotlin source code is taken by the Java development kit, the JDK, and through the Kotlin compiler. So the Kotlin compiler acts like a translator. It takes that high level human readable and writable code. It converts that code then into what is called Java bytecode. And this is not the final step, as you can see in this illustration. This is just the intermediate step. This is not converted into machine code. Then this Java bytecode, it's taken by the JVM, so it's sent to the JVM, and the JVM then takes that Java bytecode and converts that Java bytecode into something which a specific machine can understand. But let's first explain why Kotlin, why the JDK takes this Kotlin source code and then it converts this Kotlin source code into Java bytecode. And this is doing this because different processors and different operating systems need different instructions in order to understand your code. So if we will not have this Java bytecode, so if we will compile our code on a specific platform, that code can run only on that specific platform. But because our Kotlin source code is taken by the JDK and through the Kotlin compiler and is converted into Java bytecode, and the Java bytecode then it's sent it to the JVM, and JVM stands for Java Virtual Machine. And the JVM then, because different platforms and different different platforms and different processors, JVM then, because different platforms and different operating JVM, and JVM stands for Java Virtual Machine. And the JVM then, because different platforms and different operating different platforms and different processors need different instructions, the JVM is the one which is doing the hard work of figuring out what kind of instruction that specific platform needs. So it converts that Java bytecode into machine code, let's say, which a Windows platform can understand. Then the same thing happens to Linux. The JVM receives the same Java bytecode, and then it converts that Java bytecode into machine code, which a Linux platform can understand. And then it's doing the same thing to
to a macOS. So the macOS the JVM is gonna receive the same Java bytecode, and it's gonna convert that Java bytecode into machine code which macOS can understand. So this is how Kotlin and Java can achieve this thing called write once and run everywhere. This is because the work of converting that machine code which a specific platform can understand has shifted from the programmer to the platform which implements that JVM. So we just wrote our code, we run our code through the JDK. The JDK converted that code in Java bytecode, and then the platform which has the JVM installed, it's doing the work of converting that Java bytecode that we wrote into something which that specific platform can understand. So, and this is why Java and Kotlin are fully interoperable. So you can add Java code to an existing Kotlin program, and vice versa. You can add Kotlin code to an existing Java program, and that is possible because the JDK is gonna convert through the compiler all of that code into the same Java bytecode, and then that code is going to be run on the JVM, and the JVM is going to convert that into machine code, and that code is going to be on that hard working has shifted from us to the people who implement the JVM. So this is how the JDK and the JVM works under the hood. And if you find this confusing, don't be. This is just a relaxed discussion about how the JDK, what is the JDK, and what is the Kotlin compiler. Because I said our code, I said previously that our code is compiled. When I said that, this is actually what was happening. Our code was taken by the JDK, and through the JDK was converted in Java bytecode. Then it was sent to the JVM of which is on my Windows, and then that is converted into machine code, and then we see in the output hello world. So this is our discussion about the first program, how to create the first program hello world, and this is the additional discussion about how the JDK, how the Kotlin compiler, and how the JVM works. So see you in the next video. So in the previous video, we created our first program, and even though it was a simple program, you should celebrate because you created your first program. But if you want to make your program to do something useful, you need to store data. And in order to store data, we need to use variables. And this is what we're going to talk about in this video. Therefore, I'm going to open IntelliJ IDE. I'm going to create a new project. So make sure that on the left-hand side you have project selected. Click on this plus button to create a new project. I'm going to call it variables. It should be in Pascal case if it has multiple words. Language, we have already Kotlin selected for the build system IntelliJ. And also make sure to have the JDK selected here. And now I'm going to check this add sample code because this is going to generate the code that we typed previously, respectively the main function and the print line and the hello world. Text is going to be now auto-generated for us because we check this box, add sample code, and it's going to add the code automatically for us. So I'm going to click on create. The unique feature of the gap waveguide technology is that it doesn't require any electrical connection between different layers. We just put them over each other and we just rivet these points. And the riveting is not even for the electromagnetic purposes. It's just for mechanically to just keep them together. In terms of cost, you have removed the expensive processes from your building practice. That means that you will have a cheap solution. Now our project is ready to go, and as you can see here, it generated some code for us, and this is similar to what we did in the previous video where we created our code ourselves, but we have some additional code, and I'm going to delete this additional code because it will make things confusing. So I'm going to delete this part. I'm going to delete this part. And also you may have noticed that here inside this parentheses now we have this args, array, and string. We can delete this too because it will make things confusing, and we're going to talk about what are arrays and all of that in the next videos. Now alright, now we're ready. Now let's run this code to see what is happening. It's going to output that text like it did in the previous video. You should open the console in a short moment, and indeed it opened the console and it outputted the text hello world like it did in the previous video. So I'm going to close the console now. Also, let's expand this src to see the file that it was created automatically for us this time. And let's change this hello world text to print another text. Let's print, type your name there. In my case, it's Alex. So I'm going to run this code, and it will output my name in the console. Alright, so it outputted hello Alex like we typed here. But it's what we have here is pretty inflexible. A better way to do that it will be to have something to store this name and then refer that thing here, to call that thing here. In this way, it will be a bit more dynamic.
And to do that, we need to use variables. And variables are like some containers which can hold data values. And let's see how to create a variable. Okay, let's put the code below above our print ln statement. And if you don't know what a statement is a complete instruction of execution. Now, to create a variable, you just type the keyword var, which stands for variable. All right. Next, we need to give a name to our variable to be able to refer it later, to call it later. And the naming convention around naming a variable is called camel case, and that means that the first letter in the name, if it has multiple words, should start with a lowercase letter. So I'm going to type user, and the next word, name, with a capital letter. All right. Next, we need to provide the type of the variable, and that means what kind of data this variable is going to hold, is going to store. To do that, we need to put colon, and next we need to say what type of data is going to store, what data is going to store. And we want to store text, and to store text, we need to type here string. And string means that this variable is going to store a sequence of characters or text. Now, we need to assign a value to this variable, and to do that, we put here equals space, and because we explicitly said here that we're going to put text or string, we put a double pair of quotation marks, and we type Alex. All right, so now we create our variable, we give it a name, a type, and we've also assigned a value to this variable. Next, we need to refer this variable down here, and to refer that variable, I'm going to delete this text first. And to refer the variable, we put $, and after the $, we start typing the name of the variable, user. And as I'm typing, the IntelliJ is giving us some suggestions, and it says, do you mean this username variable? And it also has this V here for variable. So I'm going to press enter to fill in that for me. And if I run this code, you'll see the exact thing happening here. It outputted the text hello Alex, but this time we didn't type the text directly here. We stored that text in a variable, and we called that variable in our println. I'm going to add a space here to make things more clear. Now, what we can do is to change the value of this variable by adding below of our variable, typing the name of the variable again, user name equals, and now we can assign a new value to this variable. And let's put John here. Right? Let's run this code to see what happens now. Now, this time when this instruction is going to be called, it's going to print the new value of the variable, which is John. So, as you can see down here, it outputted the text hello John. So we can change the value of the variable after we assign a value to it. But what you can't do is to type here username equals 5. And if you hover over here, it says integer literal does not conform to the static type string. And in other words, it's saying that we said explicitly up here that it's going to store only text, and down here we try to put a whole number, an integer. And that is not going to work because Kotlin is
Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. Register the perfect domain for your business. What is going on, guys? So this is the month 2 analytic update of posting one YouTube short a day for 30 days in the span of 1 year. So I did my first video was the month 1 review. I'll put a link up here at the top if you haven't watched that one yet. But so this is going to be the month 2 chunk of it, and we have some really good results. I was expecting results, but I wasn't expecting results as good as I've seen. So month of posting one short a day. And once we go here to my watch time hours, I had 100 watch time hours at the end of the first month, and now I have 1,000. This is just for the last 28 days, a little over 1,000 watch time hours, which these don't count towards monetization, but I'm still taking it as a net positive because we're moving in the right direction. We're growing, we're getting the ball rolling. And the third metric, my subscribers, I have a total of 270 subscribers, and the last time when I made my month 1 analytic review, I only had 11. So I've over 10x to my subscribers, 270 subscribers. So amazing growth for just being, posting one short a day for 30 days of the month 2 span, which this is going for 12 months, so this is just month 2. We have 10 months left after this. So if we go over here to my content, I switched up my content strategy after month 1, so I wanted to kind of make a drastic change because month 1 I was making geoguessing videos. Just because they were easy for me to make personally, they were helping me warm up to the camera to you guys and just speaking to the camera and me not feeling awkward. I've gotten a lot better at it and I've got a lot more loose, but I still have a lot more work to do. But I changed up my strategy, and in the past 2 years I've found myself watching a lot of Sambuca videos, so it kind of inspired the style of the video I was going to make. I was going to make still with me showing my face on the camera, but me reacting. So I switched that up in a sense of the content I was making, and the results from going from my geoguessing videos to these other style videos that I was doing was huge. So the average views I was getting on my geoguessing videos, if we go over here, were anywhere from 1,500 to a max of 3,000 views, and the lowest being 4 views, almost none. So going from that to, and we come over here to my newest videos that I've been making, to averaging 4,000 to anywhere between, this one has 19,000 views. That's my best performing video. 19,000 views, 42 comments, and 614 likes. So that one really popped off, and that one has still been consistently getting me views. That one, once I posted it and it got thrown into the algorithm, I had around 18,000 views. So over the last 2 weeks, it still gained me over 1,000 views and a bunch of subscribers. So, which is crazy. It's my best performing video to date. But as far as my post scheduling would go, I wasn't super strict on I'm posting every day on Monday at 9 o'clock a.m. and it has to be video uploaded. I was kind of just floating with it, and I would post anywhere from 1 to 3 a day. But I would post one in the morning, maybe one right after lunch, and then I would post one at 6 o'clock. And what I found from that was, I don't think it really mattered on the time of the day I posted it. It was the day of the week. So if we go over into my analytics and we click the audience tab up here, after the month 2, this little when your viewers are on YouTube chart pulled up for me finally, because I had enough metrics to measure it. And the light purple here is when most of my viewers are on YouTube. So I was basically basing when I was posting my shorts on this graph. So on Sunday, by noon, a ton of my viewers are on YouTube. I was posting at 11 o'clock, giving it an hour to kind of organically grow, and then it would throw it in, and I'd get much more views on those videos. Some of these videos I would post on Sunday at 11 o'clock or 10 o'clock would get anywhere from 4,000 to 5,000 views, rather than me posting on Monday at, let's say I was posting
get it to that. Get it to that. Get it to that.
Mhm.
When it comes to dropshipping and e-commerce, people always seem to focus on the big 5 countries, the USA, the United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand. But there are so many other different countries that you can actually target, and there's a lot of untapped countries that you could potentially target. So in today's tutorial, I'm going to actually show you how you can go and target different countries on different continents for your dropshipping and e-commerce stores. So what I'll be showing you in today's tutorial is how to install an app that will allow you to go and translate your whole website into multiple different languages, and I'll also be showing you how you can then go and translate your ads into different languages and go and target those countries on Facebook. And then finally, I'll be showing you how you can go and hire virtual assistants that can go and deal with your customer services in different languages once you have gone and got customers from those different countries. So here we have a basic Shopify store that's selling custom wedding items. So initially you probably would think that this would be a store that you could easily target the US, New Zealand, Canada, the United Kingdom with, but like I said, because there's such an untapped market for other countries, I'm going to be showing you how you could take a store like this and go and target countries throughout Europe, throughout South America, and all of those other different continents that you could potentially go and get loads of different customers from. So the first thing that we are going to have to do is actually make sure that our store is translated correctly. So we're going to have to install an app that allows our store to translate all of the language on the website. So in order to do this, we're going to head back to our Shopify dashboard over here where we have apps, and we're going to go and hit visit Shopify App Store. Now, once the Shopify App Store loads, we're going to go and search for an app called Convey This. So just go and hit enter. So as you can see, it's the first one that comes up here, Convey This Language Translate. And this is a really powerful app that allows you to go and translate your whole store and actually have a completely free plan. So you can just go and test this out.
Haarschneidemaschine. सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप बहुत सारी शॉपिंग करके आए हो और घर पर अगर आपको पता चले कि वो सारी जो ड्रेसेस थी जो भी आपने खरीदा वो सब आउट ऑफ फैशन है यानी आउट ऑफ ट्रेंड है, बुरा लगेगा ना? तो बस यही गलती हम कीवर्ड रिसर्च के दौरान ना करें। इसी यहाँ पर ये यूआरएल भी टाइप करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे कोई टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, बेसिकली कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे लिखिए और ये गूगल ट्रेंड्स आपको ये बताएगा कि उसका ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड जैसे टाइप करती हूँ, जैसे मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक ग्राफ आपके सामने ओपन होगा और आप देख सकते हैं जैसे ये देखिए यहाँ पर ये रेंज दी हुई है 25 से लेकर 100 यानी टोटल 100 तक ये रेंज दी हुई है और ये हमारा ग्राफ चल रहा है और यहाँ पर नीचे ये डेट दी हुई है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे ये इंडिया की टर्म है, आप इसको वर्ल्ड वाइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोकेशन चेंज करेंगे डेफिनेटली ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा और पास्ट 12 मंथ्स का भी डेटा दिखाई दे रहा है। आप इसको पास्ट 7 डेज का कर सकते हो, पास्ट 4 डेज का कर सकते हो, लास्ट आवर का कर सकते हो, ठीक है? और ला पास्ट 5 ईयर्स का भी ये आप डेटा कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज में आप इसकी कैटेगरी पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये इतना काम का ऑप्शन नहीं है। वेब सर्च है तो अब यहाँ पर आप वेब सर्च यानी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब पर इसका ट्रेंड कैसा रहा है, इमेज के ऑप्शंस में इसका सर्च कैसा रहा है, न्यूज़ में कैसा रहा है इस पर्टिकुलर टर्म का ट्रेंड, या फिर गूगल शॉपिंग के हिसाब से या फिर यूट्यूब सर्च के हिसाब से। सो इवन यूट्यूब के भी ट्रेंड का एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब का कोर्स आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल ट्रेंड्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली यूट्यूब के कीवर्ड्स को जज करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी वेब सर्च पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है? एंड वर्ल्ड वाइड कर दिया, पास्ट 5 ईयर्स का मैंने ये ट्रेंड देख लिया, मैं इसको वापस से पास्ट 12 मंथ्स का कर देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये ग्राफ हमें कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है देखिए कि ये जो हमारा कीवर्ड है ना बेसिकली ये कहते हैं कि 50 से ज्यादा अगर आपका ग्राफ जा रहा है ना तो मतलब वो काफी ट्रेंडिंग है। तो आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ ना कभी भी 50 से नीचे नहीं आया है, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये जो zigzag साइन है ना ये प्रेडिक्टेड साइन है, प्रेडिक्शन है ये, ठीक है? तो ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे साइन चल रहा है और गूगल के अकॉर्डिंग ये जो कीवर्ड है ना ये इसका डाउनफॉल आएगा यानी ये नीचे गिरेगा यानी इसकी ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि लेकिन अभी अगर मैं बात करूं गूगल के प्रेडिक्शन के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं तो काफी ट्रेंडिंग ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कोई भी कीवर्ड आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया क्लास 10th रिजल्ट्स, ठीक है? एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो ये देखिए क्लास 10 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए इस तरह से इसका ट्रेंड रहा है और
get it to the, get it to the.
आ रहा हूँ। पता है देर हो गया। एक तो इतनी भूख लग रही है, बहुत भूख लगती है यार मुझे आजकल, बहुत भूख लगती है। सो जाऊंगा और क्या। मुझे आजकल आजकल बहुत भूख लगती है। कुछ खाने का ही नहीं होता यार, अंडे 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 खा खा के अभी 4 अंडे खाए थे। कुछ नहीं था। नहीं मैंने ओवन में भी चेक किया, कुछ अभी थोड़ी मैं खाऊंगा यार, लेकिन अंडे 4 खाए थे रात को, आधी रात को, और कॉफी भी पी थी। सिर्फ 2 टाइम में खाता हूँ ना, एक ही बल्कि टाइम मैंने खाया, वो चावल खाया, वो क्या ये है।
guys, I'll end the stream. I'm feeling so hungry. So hungry. So I'll end the stream and I'll go to sleep. Bye bye.